हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट चौका नंबर 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, ए जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स वेस्ट एट स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर. The voltage difference developed between the ends of the wing having a span of 25 meter is Earth's magnetic field is 5 into 10 to the power minus 4 and dip is 30 degree. 3.1 volt, 0 volt, 4.3 volt, 1.55 volt. Question number 2. An air cord solenoid length 30 centimeter, area of the cross section 25 centimeter square and number of turns 500 carries a current of 2.5 ampere. The current is suddenly switched off in time 10 to the power minus 3 second. The average backup EMF induced across the open switch in circuit is 6.5 volt, 3.5 volt, 6.0 volt, 2.0 volt. Question number 3. A state wire carries a current of 550 ampere. Loop is moved towards right with a constant velocity. V is 10 meter per second. See figure. The induced EMF in the loop at instant x is equal to 0.2 meter is, take A is 0.1 meter. 50 volt, 200 volt, 1.7 into 10 to the power 5 volt, 1.0 into 10 to the power minus 5 volt. Question number 4. A horizontal wire 10 meter long extending from east to west is falling with the speed 5 meter per second at right angle to the horizontal component of the Earth's magnetic field. 0.3 into 10 to the power minus 4 Weber per meter square. The induced EMF in wire will be 1.5 into 10 to the power minus 2, 2 into 10 to the power minus 2, 1.5 into 10 to the power minus 3, 2 into 10 to the power minus 3 volt. Solution. Question number 1. A jet plane is traveling towards west at a speed of 1800 km per hour. The voltage difference developed between the ends of the wing having span 25 meter is, Earth's magnetic field is 5 into 10 to the power minus 4 Tesla and deep angle is 30 degree. 3.1 volt, 0 volt, 4.3 volt and 1.55 volt. The speed of plane is 1800 किलोमीटर पर आवर. इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में कर दें तो 1000 और 3600 मीटर पर सेकंड, यह आ जाता है 500 मीटर पर सेकंड. जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन होती है, अगर ये साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, और जब एरोप्लेन टुवर्ड्स वेस्ट मूव करेगा हॉरिजॉन्टली, तो ये जो अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसको क्रॉस करेगा. तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है. डीप एंगल इज 30 डिग्री. अगर दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा. अगर इसको हम BS से डिनोट करें और ये BV, तो B इज 5 into 10 to the power minus 4 टेस्ला.
और डीप एंगल इज 30 डिग्री। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है जिसको विंग्स क्रॉस करेंगे, दिस इज बी वी, तो बी वी की वैल्यू होगी बी वी इज इक्वल टू बी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -4 साइन 30 इज हाफ 2.5 into 10 to the power -4 Tesla. Length of wings is 25 meter. Voltage difference developed E is equal to B V into speed into length. So BV is 2.5 into 10 to the power -4. V is 500 or L is 25 meter. Two 2.5 into 5 into 25 into 10 to the power -2 or 62 into 5 into 10 to the power -2 or 5 312 312.5 into 10 to the power -2 or 3.125 volt or approximately 3.1 volt. तो ईएमएफ डेवलप्ड होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा विंग्स के एडेड एंड्स पर, तो 3.1 वोल्ट। ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, an air cored solenoid with length 30 cm, area of the cross section 25 cm square and number of turns 500 carries a current of 2.5 ampere. The current is suddenly switched off in time 10 to the power -3 second. The average backup EMF across the open switch in the circuit is 6.5, 3.5, 6 and 2 volt. एक सोलेनॉइड इसकी लेंथ L, L is 30 centimeter or 0.3 meter. Number of turns N is 500. Total turns area of the cross section, area of cross section 25 centimeter square or 25 into 10 to the power -4 meter square. Initial current I1 is 2.5 ampere and final is 0. Time taken dt 0 होने में 10 to the power -7 second. Number of turns per meter n, small n, n by L or 500 divided by 0.3, 5000 by 3 turns per meter. मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का फॉर्मूला आता B इज इक्वल टू
mu 0 Ni, or flux per unit turn is phi is equal to mu 0 Ni into area. ये बी ए के इक्वल होता है टोटल फ्लक्स। अगर इसको फाई डैश से करें तो फाई टोटल फ्लक्स एन फाई डैश, ये होगा एन बी ए, और एन म्यू 0 एन आई ए। Initial flux phi 1 is n mu 0 n a into I1, और फाइनल फ्लक्स है n mu 0 n a into I2. Change in flux phi 2 minus phi 1 is equal to n mu 0 n a I2 minus n mu 0 n a I1, or n mu 0 n a I2 minus I1. This is d phi, or d phi by dt is equal to n mu 0 n a I2 minus I1 by dt, or E is equal to minus d phi by dt minus n mu 0 n a I2 minus I1 by dt, or minus n mu 0 n a 0 minus 2.5 divided by dt, or 2.5 n mu 0 n a by dt. बाकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2.5, दिस इज 500 इंटू म्यू 0 4 पाई 10 to the power minus 7 स्मॉल एन 5000 by 3, और क्रॉस सेक्शनल एरिया 25 इंटू 10 to the power minus 4 divided by 10 to the power minus 3. 2.5 into 500 into 4 pi into 5000 into 25 into 10 to the power minus 11 by 3 into 10 to the power minus 3. Two 2.5 into 5 into 4 pi into 5 into 25 by 3 into 10 to the power minus 3. Five into 5 into 25
into 25 into 4 pi 10 to the power minus 3 by 3. 625 into 10 pi by 3 into 10 to the power minus 3. 625 pi by 3 into 10 to the power minus 2, or 6.25 into 3.14 by 3. 625 6.3 19.625 by 3 और 6.5 वोल्ट। जो बैकअप पोटेंशियल होगा वो होगा 6.5 वोल्ट। ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, a straight wire carries a current of 50 ampere and loop is moved to right with constant velocity 10 meter per second. The induced EMF in the loop at instant x is equal to 0.2 meter. Take A is 0.1 meter. 50 volt, 200 volt, 1.7 into 10 to the power 5 volt, 1 volt, 1 into 10 to the power minus 5 volt. Suppose a section at r distance from the wire. ये अगर वायर का लूप हम पी क्यू आर एस और ये हमने ले लिया है सपोज टी एंड यू। This distance is small r. The magnetic field at TU section. Magnetic field at TU section BT is equal to mu 0 I by 2r. Or the magnetic field at PS section BPS होगा mu 0 I by 2x and BQR mu 0 I by 2x plus a. 2 pi x plus a, 2 pi x and 2 pi x plus a. In small time dt, P dash
P comes at PS comes at P dash S dash, or QR is at Q dash R dash in small time dt. So PP1 PP dash will be V dt is equal to Q dash. PP dash is very small, तो जो सेक्शन है PP डैश S इस पर जो बी मैग्नेटिक फील्ड BPS को कांस्टेंट मान सकते हैं। इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज BPS। सिमिलरली Q डैश इज स्मॉल, तो जो मैग्नेटिक फील्ड QR पर था उसको हम यहाँ पर कांस्टेंट मान सकते हैं BQR। फ्लक्स थ्रू PP डैश S वो होगा BPS इंटू एरिया ऑफ PP डैश S इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 2 पाई x इंटू A इंटू V dt. This is suppose phi 1. Flux through Q dash R section is equal to BQR into area Q dash R μ0 I upon 2 pi x plus A into A V dt. This is phi 2. In dt time, dt change in flux, दोनों का डिफरेंस होगा phi 1 माइनस phi 2। μ0 I अपॉन 2 पाई x AV dt minus μ0 I by this is d phi I by 2 pi x plus AV dt. d phi by dt, d phi is equal to μ0 A μ0 I A V dt by 2 pi 1 upon x minus 1 upon x plus a.
और डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू पोटेंशियल इंड्यूस्ड ईएमएफ ई म्यू ज़ीरो आई ए वी बाई 2 पाई 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस ए म्यू ज़ीरो आई ए वी बाई 2 पाई एक्स एक्स प्लस ए माइनस एक्स और म्यू ज़ीरो आई वी ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई एक्स एक्स प्लस वैल्यूज़ पुट कर दें हम तो ई की वैल्यू म्यू ज़ीरो इज़ 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7 करंट आई 50 एम्पियर 50 एम्पियर स्पीड v 10 मीटर पर सेकेंड a is 0.1 का स्क्वायर बाई 2 पाई x की वैल्यू है 0.2 प्लस 0.1 2 पाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 5 इंटू 50 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 बाई 0.2 इंटू 0.3 2 इंटू 50 इंटू 10 into 10 to the power minus 9 divided by 2 into 3 10 to the power minus 2 तो उसे 2 क्रॉस हो गया 5 by 3 into 10 to the power minus 5 और 1.7 into 10 to the power minus 5 volt. So 1.7 into 10 to the power minus 5 volt. C is correct option. Question number 4. A horizontal wire 10 meter long extending from east to west is falling with speed 5 meter per second at right angle to the horizontal component. The Earth's magnetic field 0.3 into 10 to the power minus 4. The induced EMF of the wire is 1.5 into 10 to the power minus 2, 2 into 10 to the power minus 2, 1.5 into 10 to the power minus 3, 2 into 10 to the power minus 3. The magnetic field involved है horizontal B is 0.3 into 10 to the power minus 4 Weber per meter square. V speed is जो falling speed है 5 meter per second और length is 10 meter. Induced EMF is BVL. B is 0.3 into 10 to the power minus 4 into V 5 into 10. 1.5 into 10 to the power minus 3 volt. 1.5 into 10 to the power minus 3 volt. C is correct option.